I'm not from Nepal, Karun. We'll start the session at 5:40. Okay. What is the session about? Plant kingdom. Yagnesh. Yagnesh. Is it Yagnesh? I don't know how to pronounce your name. Three quality of yours you admire. I have many, but I can't like say it in front of camera. I'll get shy. खुद की तारीफ खुद ही की मुंह से. I have many. You, Shivam. Go with the flow. It was sweet to hear the way you pronounce it. What is Plant Kingdom? Plant Kingdom is the name of a chapter. We just have 2 minutes left. Then we will study, okay? First, I am a reputed engineer. I am in a reputed engineering alliance. हाँ वो तो मुझे दिखा. IIT ग्वालियर ना. Second, I'm a state level badminton player. And third, I found you. बढ़िया था गुरु. Stalking. Who? You're stalking me? Or you are asking? Whom should I stalk? WHOM. Whom should I don't know. I'll not type it. I got it. Yeah, I checked your profile.
I'm burning, bro. I'm burning. Desires also burns, so channelize it. I don't know why, but I want to see your face again, Shubham. Shubham Raj something.
चलो स्टार्ट. ओके, गुड लक यांगपोंग, अबान, गुड लक एवरीवन. 60 मिनट का सेट कर दिया है. ओके, विल स्टडी फॉर 60 मिनट. बाकी का देख लेंगे. सोते वक्त चलूँगी. ओके, अभी नहीं चलूँगी. बर्निंग. Plant life cycle and alteration of generation. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. In plants, both haploid as well as diploid plants can divide by mitosis. This ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid. The haploid plant body produces gamete by mitosis. This ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid. The haploid plant body produces gamete by mitosis. This plant body The haploid plant body produces gamete by mitosis. This plant body represents a gametophyte. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. These in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alteration of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. Okay. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. In plant, both haploid as well as diploid cells can divide by mitosis. This ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid plant bodies. Plant bodies produce gamete by mitosis. Haploid plant body. Produce gametes by mitosis. The haploid plant body produces gametes by mitosis. This plant body represents
body produces gamete by mitosis. This plant body represents gametophyte. Following fertilization, that the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophyte. Okay. Following fertilization, zygote also divides by mitosis. To produce diploid sporophytic plant body. The zygote also divides by mitosis to produce diploid sporophytic plant body. By mitosis, zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. 2n. Haploid spores are produced by the plant. Haploid spores are produced by this plant. Okay, sporophyte. Sporophyte. Produces a spore. Meiosis. This in turn divides by mitosis to form a haploid plant body once again. Sporophytic plant body 2n produces spores n by meiosis. Okay. This in turn divide by mitosis. This in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again. Spores undergo mitosis to form haploid plant body. Spores goes thus this in turn divides by mitosis to form a haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, these are the alteration of generation. Okay, during the life cycle of any alteration of generation for sexually reproducing plant, this is the alteration of generation. This is the alteration of generation between gamete producing haploid gametophyte. Alteration of generation. Life cycle of any sexually reproducing. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is alteration of generation. Generation for sexually reproducing plants. For sexually reproducing plants, there is an alteration of generation. Gamete producing haploid gametophyte. Alteration of generation between
In plant, both haploid and diploid can divide by mitosis. That leads to formation of different plant bodies. The haploid plant body produces gamete by mitosis. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. Okay. Gametophyte and okay. Gametophyte gamete mitosis gamete GAMET gamete okay N, and then these gamete again produce zygote ZYGOT zygote 2N by mitosis only. Mitosis, not mitosis, that is fertilization. Haploid and diploid okay. Gametophyte mitosis gamete and gamete fertilization zygote or sporophytic body. Sporophyte undergoes meiosis. Sporophyte mitosis. Zygote also divide by mitosis after fertilization. Diploid sporophyte okay. Zygote sporophyte one also. Zygote then sporophyte. Zygote sporophyte. Diploid sporophytic plant produce plant body to produce haploid plant body, that is gametophyte okay. Preparing for NEET, yes Sangram, you're right Sangram Patro. Gametophyte gamete fertilization zygote, zygote से sporophytic body, sporophyte PH by T, sporophyte by mitosis 2 and meiosis, it undergoes meiosis 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 and produces spores. Spore is spores N. This spores again produces gametophytic plant body. Gametophytic plant body and gametophytic plant body N okay. So we have gametophyte and gamete by mitosis. This is N. Fertilization we have zygote. Dominant states gametophyte haploid plant body again embryophyte. Haplodiplomatic
Haploid and diploid gametophyte and mitosis gamete fertilization sporophyte 2n is equals to zygote. Okay, zygotic meiosis. Okay, zygotic meiosis, multicellular sporophyte, haploid and haplon. Algae life cycle is haplontic. Zygote is only diploid state. Zygote is only diploid stage. Okay. Haploid plant dominant stage maximum time gametophyte. Green photosynthetic free living. Green photosynthetic. यताबाट कन्टिन्यू एक यो पस्तोसहरू किन काटेको होला है पोहोर 2000 थियो भने हेर्नु पनि हजुर काटेर गएछ त के हजुर कुनी नकाटेन पनि न त 3 यताबाट नै 2800 कुन कति रुपियाँ जाँदो रहेछ हैन हजुर अन्त त उब्रेको गर्दा त निकै बेला आउनु पर्ने यो एसबिआई ब्याङ्क त नराम्रो रहेछ अन्त कसले मन पराउँदैन एसबिआई ब्याङ्क राम्रो पैसा दिन्छ भन्दै गनिरहेको हुन्छ सबजना न त महिनै पछि चाहिँ अब त्यो 3000 हाल्दा 100 कुन कति रुपियाँ 100 कुन कति रुपियाँ उब्रिनु पर्ने महिनै पछि यो तपाईको नि कुन चाहिँ महिनामा इन्स्योरेन्स काटेको 2828 रुपियाँ काटेको हो सर काट्छ त्यति काटे चाहिँ उब्रिनु पर्ने 3000 लाखमा त है हजुर उब्रेको छ त नि 500 रुपियाँ 500 त उब्रिनु तर त्यो 1 वर्ष कतिमा हैन रिन्यु गरेको अप टु डेट गरेको यो तपाईको कहिले काटेको भन्नुस् त यो जनवरीमा काटेको छ तपाईको पैसा यहाँ डेट देखाइराख्छ 31 तारिख काटेको छ जनवरीमा हजुर यो वर्षको काटेको छ यो वर्ष जनवरीदेखि काट्न थालेछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ काटेको छैन 3 वर्ष पुरा पुग्दाखेरि चाहिँ नि 30,000 मेरो बोनस पाउँथे हैन हो त्यो चाहिँ निकालिन ए हजुर त्यो चाहिँ निकाल्नु भएको थिएन त्यही छिन्नु लाए त्यही छिनाए ए हजुर मैले उता 3000 महिना मन्थली लाइन कि हजुर त्यहीँबाट काटाएको त्यहाँबाट चाहिँ लाउनु थालेको चाहिँ जनवरीदेखि रहेछ जनवरीदेखि काटेको रहेछ हजुर जनवरी फेब्रुअरी मार्च कति यही जनवरी हजुर 25 कै जनवरीमा काटेको छ ए त्यो अस्तिको महिनाको रहेछ हजुर जनवरी महिनाको 23 तारिख 1 महिना 2025 इन्स्योरेन्सको पैसा पनि पसिबस्छ तुमा इन्स्योरेन्स हैन मैले पस्दैन है तपाईले मात्रै भएको तपाईको कार्ड मैले मात्रै हाल्नु यहाँनिर 100 रुपैयाँ पनि काटिरहेको छ त्यसबाट काटेको छ होस् त काट्छ र त के नकाटेको त्यो कुनी कि यो पासबुक चाहिँ उयसको लागि निकालेको मैले 500 तिरेर एकाउन्ट खोलेको र पो होला है हैन जिरो ब्यालेन्समा पनि खोलिन्छ आजकल त 1 रुपैयाँ नलालिकन पनि खोलिन्छ यो चाहिँ त्यो रड्डी भयो नि हजुर 100 रुपैयाँ यहाँनिर काट्दैछ कुनी किन काटेको मनी दादाले तपाईलाई 3000 लगाइदिनु भएको थिएछ कहिले खै कुनी कहिले हो मनीलाई हजुर लाग्थिन त तपाईले लगाउनु भएको हैन मनी दादाले लगाइदिनु भएको ए मनी दादाले चाहिँ तपाईलाई 3000 रुपैयाँ पैसा हाल्दिनु भएको थिएछ यहाँनिर डिपोजिट गरिदिनु भएको निकाल्दिनु भएको हैन हाल्दिनु भएको ए हैन त्यो चाहिँ इन्स्योरेन्स तिर्दाखेरि सायद मनीको पासबुकबाट बुवाले पठायो होला लगाउनु भनेर पठायो होला कि कसो हो यहाँनिर कुन चाहिँ मा 2025 11 तारिख यही अस्तिको यही वर्षमा जनवरीमा 3000 हाल्दिनु भएको छ तपाईको अकाउन्ट न त्योभन्दा अगाडि त काटेको 3000 2800 काटिँदैछ हुनु चाहिँ 2800 1 महिना 2 महिना 3 महिना यो त किन हो तर यहाँ छैन तर 2024 मा पहिलाको सालमा चाहिँ जनवरीमा हजुर जनवरी महिनामा तपाईको दुईपल्ट काटेछ पैसा दुईपल्ट काटेछ त्यो त के गरेको मैले पनि बुझिन के गरेको त यसो दुईपल्ट त नकाट्नु पर्ने हुँदैन कि 15 दिनमा काटिदिन्छ महिनामा काटेको लास्ट महिना काटिन्छ के अरे तादुङमै कहाँ छ गएकै छुइनँ म के अरे तादुङमै कहाँ छ गएकै छुइनँ म त्यहाँ कहाँ छ अरे कि हजुर त्यहाँ बाबु तादुङमा छ भनेको त मैले सुनेको थिएँ हजुर त्यो मेट्रो पोइन्टको त्यहाँनिर हो कि बा त्यता कता हजुर
मेरो कम्ती तिर्नु छैन मेरो काँसी लाग्दैछ अब हुन्छ म 5 वर्ष भएपछि चाहिँ म चाहिएन इन्सुरेन्स काटिदिन्छु 0 बक्समा पुऱ्याइदिन्छु होइन तिर्नु त साह्रो हो कि तर सुम्बा पाउँदाखेरि त मजा आउने फेरि अब निकाल्यो भने पनि कम्ती भए पनि खोल्नै त भन्दै थियो त्यो बाबुले नि हट मलाई अल्छी लाग्यो छोराको पनि 2-2जना नातिहरूको हजुर त्यो पनि हो हुनु चाहिँ ठुलो साइकल झन् वर्षमा 50,000 हजुर त्यही त 50,000 तर पछि उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो डिसेम्बरमा 50,000 निकालिहाल्नुहोस् मनी नाम्साङको डिसेम्बरमा पनि होइन जेन अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरमै भयो ए हजुर धन्ना तर एक उयो मन्थली नतिरेर एकैचोटि घरप्पै दिनु हो त म घरप्पै 50-50 ए हजुर 6 महिनामा एकपल्ट होइन 1 महिनामा वर्षमा एक वर्षमा चाहिँ 50,000 अर्को वर्षमा चाहिँ 50,000 हजुर तिर्नु चाहिँ दुःख तर बुकको लागि त राम्रो नि तुमा 7 वर्षदेखि मनी नाम्साङ कति वर्षदेखि गरेको त्यसको अहिले 8, 9, 12, 13 वर्षमा 12मा छ होइन हजुर 12मा छ 10, 18 वर्ष पुग्दा निस्किन्छ 18 वर्ष पुग्नु चाहिँ उसलाई कति छ अहिले 13 छ है 12 छ अहिले त 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 वर्ष 6 वर्ष 1 वर्ष तिरिसक्यो हजुर अब रह्यो 1 वर्ष अस्ति यो माघे सङ्क्रान्तिमा यति थुपारेको छु सबै म दाल खान ल्याइदिन्छु भनेर एल्गे लाइफ साइकल डिप्लोइड हुन्छ त म टर्च छ तुमा तपाईको टर्च छ ए हजुर Algae life cycle is haplontic. Algae life cycle is haplontic. Zygote is only diploid stage. Zygote is only diploid stage. Algae life cycle is haplontic. Algae life cycle is haplontic. Zygote is only diploid stage.
Haplontic stage. Haplontic stage gametophyte. Gametophyte is green, photosynthetic, free living. Dominant stage, maximum type. Dominant stage, okay. Gametophyte, haplontic stage. Stage. Dominant stage is gametophyte. Gametophyte, green, photosynthetic, free living. Green. Green, photosynthetic and free living. Astaghfirullah, free living. Haploid and haplontic life cycle. Gametophyte and mitosis, gamete and fertilization. Sporophyte, zygote, 2n, okay. Fertilization, sporophyte or zygote. Haplontic, zygote is only diploid stage. Algae life cycle is haplontic, zygote is only diploid stage. Zygotic meiosis occur in haplontic life cycle. Algae life cycle is haplontic. Algae life cycle is haplontic. Haplontic life cycle. Algae life cycle is haplontic. Is only diploid stage. Zygotic meiosis occurs in haplontic life cycle. Algae haploid plant. Haplontic stage is the dominant stage. Gametophyte. Gametophyte, green, photosynthetic and free living. Green, photosynthetic and free living. Green, photosynthetic and free living for algae. Haplodiplontic life cycle, both gametophyte and sporophyte stage is multicellular, okay. The haplontic life cycle. In haplontic life cycle, both gametophyte and sporophyte stage is multicellular. Astaghfirullah. In haplodiplontic life cycle, both gametophyte and sporophyte stage is multicellular. Mitosis, gamete, gamete to zygote, zygote to sporophyte. Mitosis, okay. Meiosis, spores, spores again. Mitosis, gametophyte. Mitosis. Bryophyte, gametophyte, dominant stage. Sporophyte, reduced, okay. Pteridophyte, spores, dominant stage, large lifespan, okay. Gametophyte, reduced lifespan, okay. In pteridophyte, sporophyte is the dominant phase. In bryophyte, gametophyte is the dominant stage, okay. Haplodiplontic, bryophyte and pteridophyte. Haploid plant body for bryophyte and diploid plant body for pteridophyte. Haploid plant body in bryophyte and diploid plant body in pteridophyte, okay. In haplodiplontic life cycle, both gametophyte and sporophyte stages multicellular. You just have to focus, Ima.
Diplontic, Bryophyte and Pteridophyte. Okay. HAPLO, Haplodiplotic. In haplodiplotic life cycle, both gametophyte and sporophyte stays are present. Okay. And we take multicellular. Okay. Both gametophyte and sporophyte stages multicellular. Sporophyte stages multicellular. Multicellular is multicellular. Alhamdulillah. Bryophyte, Pteridophyte. Bryophyte, haploid plant body. Haploid plant. Haploid plant. Bryophyte, haploid plant. Then we have Pteridophyte, Pteridophyte, Phyt, right? Diploid plant body, Diploid, diploid plant. Okay. Both gametophyte in haplodiploidic, both gametophyte and pteridophyte both are multicellular. Okay. Gametophyte and sporophyte 2n. Okay. Mitosis, gamete, zygote, mitosis, sporophyte, and then meiosis, spores, mitosis, again gametophyte, multicellular. Okay. Dominant stage gametophyte, sporophyte reduce. Gametophyte, Phyt, multicellular. Okay. Sporophyte, Phyt, sporophyte. Gamete, Gamete, gamete. Zygote, zygote. Near mitosis. Okay. Mitosis, gamete N. Here also gametophyte N. Okay. Here we have fertilization. Fertilization, zygote 2n, sporophyte 2n. Meiosis, 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 spores. Mitosis, sporophyte, dominant stage, large lifespan. Dominant stage. Stages. आगो त आफै आगो छ Gametophyte. Gametophyte. मैले ताप्नु मन छैन, आफैलाई ताप्नु मन छैन, ताप्नु किन बबुवासँग बात गर्छ गर्दिन अनि किन आएको? किन गर्नु फोन गरेको छैन होइन किन गर्नु ब्लक गरेको छ भनेर सोचेर होला नि अनि तर सोचेको ब्लक गरेको त छैन ब्लक त उसले त गर्दैन हामी किन गर्नु त्यो पनि हाम्रोमा नेटको कल मात्रै हो नि मैले ब्यालेन्स लगाएको छैन नि रिचार्ज बेकारमा अरे गर्छ
अहिले गर्दैन होला, अहिले आमाको जरुरत छैन। अब पैसा अस्ति पसेको उसको सेलेरी आउनु आँट्यो, त्यही किन भनेको। गर्छ बेकार। जब आफूको जरुरत पर्छ त्यतिखेर गर्छ होला सायद। भाइ बोकेको सबै पैसा खाएर अझ दिए भएको अब छैन। खनाल सरको छोरीको बिहा कहिले हो? शुक्रबार हो नि। जान्छस् कहाँ जाँदिनै, आमा र आन्टी गफ गरेको सुने कि अन्त तँसँग जानु जा जाँदिनै। आन्टीसँग जानुपर्ने, मेरो थुप्रो त्यहाँ अब पैसा जान्छ। किन? 1500 मेरो पैसा हिँड्छ। किन? 1000 रुपियाँ लिफालामा लाउनु पर्यो म गएपछि। 500 त यताउता टिका लगाइदिनुपर्छ, खदा लगाउनु पर्छ भन्दैछ आन्टीले। लगाउनु दिनु न अन्त आन्टी। लाउनै पर्यो आमाको। लिचेलाई 1000 मागिन्छ। Dominant stage is sporophyte. Sporophyte, gametophyte. काम पनि हल्ट थियो नि। काम पनि गर्दैन कोही पनि। मोटुले 50 रुपियाँ लाउँछु, 100 150 लाउँछु भन्दै थियो, 50 रुपियाँ मात्रै लगाउनेको भाइ। किन? अनि इस्लामपुर को जान्छ? म त यहीँ छु, मरि गएको त आउँछ नि। Diplontic is gymnosperm and angiosperm. Sporophyte to dominant, gametophyte is reduced. Diplontic, okay, is gymnosperm and angiosperm. They have gametophyte, low cell number. Sporophyte, cell number high. Okay, gametophyte to sporophyte to gametophyte. Oh, they are easy. Sporophyte dominant, multicellular, large number of cells, whereas gametophyte reduced, number of cells decreases, dependent, non-green. Okay, okay, it is easy, I guess. Gametophyte and sporophyte. Gametophyte and sporophyte to N. Gametophyte to sporophyte and sporophyte to gametophyte. Isn't it easy? I guess it is. This is diplontic life cycle, okay? Gymnosperm and angiosperm. What is this? Gametophyte to sporophyte to gametophyte, okay? The cell number, low cell number high. Low cell number, low cell number, cell decreases, okay? Dependent and non-green. They are dependent and non-green. Low cell number, dependent and non-green. High cell number, they are multicellular. Are they? Yeah, multicellular, okay. These are diplontic, okay? Dominant, sporophyte dominant. This is dominant, this is reduced. And these are dominant. It is dominant, okay? Their gametophyte is
Clover leaves. Thank you, Alex. Dominant low, cell number. Sporophyte, cell number high. Sporophyte, dominant, multicellular, large number of cell. Gametophyte, reduced number of cell. Decreases, dependent and non-grain. They are dependent and non-grain. They are reduced. Okay. Some basic concept. Embryophyta. Then we have to study this too. भाई साहब मैंने नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा तो. Female sex organ, archegonium. Bryophyta, Pteridophyta, and Gymnosperm are archegonium. Okay. Egg apparatus, angiosperm. Why do I have to study this much? I don't have any option. Embryophyte, I have to study it. Some basic concepts. Okay. Basic concepts. Embryophyta. Embryophyta occurs in haplodiplontic life cycle. Embryophyta occurs in haplodiplontic life cycle. Zygote undergo mitosis to form embryo. Algae is not embryophyta due to zygotic meiosis, except Fucus, Ectocarpus, Kelps, and Polysiphonia. 4 algae exception. भाई साहब सारे के सारे ही तो exception है. Exception पढ़ते पढ़ते मेरा दिन निकल जाएगा. Basic embryophyta. Okay. कहाँ पर होता है embryophyta? Number 1 embryophyta, EMBRYO, embryophyta, PHYT, embryophyta. This occurs in haplodiplontic life cycle. Haplodiplontic or diplontic life cycle. Diplontic or haplodiplontic life cycle. Embryophyta, CURS, occurs in diplontic. Occurs in diplontic and haplodiplontic. Diplontic. Embryophyta occurs in diplontic and haplodiplontic and diplontic life cycle, where zygote undergo mitosis to give embryo. Zygote undergo embryophyte. Okay, this is zygote, isn't it? Yeah, this is zygote. Zygote undergo mitosis to give embryo. This is called embryophyte. Okay, this is embryo. Zygote undergo mitosis, embryo. Algae is not embryophyta due to zygotic meiosis. Algae here, okay, point. Algae is not embryo due to the zygotic meiosis. Algae is not embryo due to zygotic meiosis. Algae is embryophyta. PHYT. Algae is not embryophyta due to zygotic meiosis. Okay, but there are exceptions. Exceptions of algae. Exceptions of algae. Algae. These are Fucus, Ectocarpus, Kelps. Okay, Fucus, Ectocarpus, Kelps, and Polysiphonia. Polysiphonia. इतना सारा एक्सेप्शन कैसे याद होगा? Algae is not embryophyta due to zygotic meiosis. Exception: Fucus, Ectocarpus, Kelps, Polysiphonia. Fucus, Ectocarpus, Kelps, and 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 Polysiphonia. Algae is not embryophyta due to zygotic meiosis. Exception: Fucus, Ectocarpus, Kelps, and Polysiphonia. Fucus, Ectocarpus, Kelps, and Polysiphonia. Fucus, Ectocarpus, Kelps, and
Polysiphonia. These are the 4 algae. These are the 4 algae. Fucus. Then we have Fucus, Ectocarpus, Polysiphonia, Fucus, Ectocarpus, Polysiphonia, and Kelps. These are the example of Embryophyta. Okay, zygote undergo mitosis to form embryo. Embryophyta occurs in haplodiplontic and diplontic life cycle. Occurs in haploid, diplontic. Okay, diplontic life cycle. Haplodiplontic and diplontic life cycle. Okay, occurs in diplontic as well as haplodiplontic life cycle. Got it. Embryophyta. Bryophyte, Pteridophyte, Gymnosperm, Angiosperm. Zygotic mitosis. Okay, algae zygotic meiosis. Okay, Embryophyta. What's this? Cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy and phanerogamy. इतना सारा एग्जाम्पल है, याद तो कर पाएगी ना, लगता तो है. Embryophyta. Okay, Embryophyta, PHYTA phyta. Zygotic mitosis. Zygotic mitosis. Mitosis. Example: Bryophyte. Bryophyte, PHYT. Bryophyte. Number 2, Pteridophyte, PTERID. Pteridophyte, PHYT. Pteridophyte. 3, Gymnosperm. GYMNOSPM. Gymnosperm. And then we have algae. Algae, it's angiosperm. Angiosperm. Okay, these are all Embryophyta. Zygotic mitosis. Here both are haplo, HPLO, haplo, diplontic, DIPLO, diplon, haplodiplontic. Okay, life cycle. Then we have diplontic life cycle. Diplontic, haplodiplontic life cycle, diplontic life cycle, diplontic life cycle. Then we have algae. Okay, algae. ALG, zygotic meiosis. Here, zygotic meiosis, zygotic meiosis, haplontic life cycle. Haplontic life cycle, and they are not Embryophyta. Embryophyta, PHYTA. These are additional, I guess. These are not Embryophyta. में इतना कर लेते हैं ना, बाकी में देख लेते हैं. Cryptogamy and phanerogamy. Now it's cryptogamy and phanerogamy. स्टार्ट ही है. अभी 12 मिनट के बाद तो ब्रेक होगा. You came late. Cryptogamy and phanerogamy. Number 2, cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy, GAMAE, gamy, cryptogamy, and phanerogamy, PHANER, phanerogamy, GEMAE, gamy. Cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy and phanerogamy. Okay, cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy, that these are those species that have hidden sex organ like cryptogamy, hidden sex organ. Phanerogamy, visible with the naked eyes. Okay, cryptogamy and phanerogamy. It's easy. Cryptogamy, hidden sex organ, HIDDN, hidden sex organ. Phanerogamy, naked sex organ. Is it naked? I guess it is naked sex organ. And then other is hidden sex organ. Cryptogamy are
hidden sex organ. Algae, bryophyte, and pteridophyte. Gymnosperm and angiosperm. They have naked sex organ. Naked sex organ, angiosperm. Angiosperm. And number 2, gymnosperm. 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 Hidden sex organ, cryptogamy. Algae, bryophyta, bryophyte, and then we have pteridophyte. Pteridophyte, Phyte, pteridophyte. Algae, bryophyte, and pteridophyte. Cryptogamy, phanerogamy. Okay. See, देखा भाकू plant को sex organ. Okay. Spermatophyte. Angiosperm, seed present. Example. Okay. Spermatophyte, seed present. Cryptogamy, hidden sex organ. Hidden sex organ. And phanerogamy, sex organ. Phanerogamy, example of phanerogamy, we have gymnosperm and angiosperm. For cryptogamy, algae, bryophyte, and pteridophyte. Spermatophyte, and then we have Tracheophyta. Spermatophyte. Is it spermatophyte? Yeah, it is spermatophyte. Seeds are present. Present. Example, angiosperm and gymnosperm. These are spermatophyte. Okay, spermatophyta. Tracheophyta, vascular, presence of vascular bundle, that is pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm, right? Vascular bundles are tracheophyta. Vascular bundles are present. Pteridophyte is gymnosperm and angiosperm. Pteridophyte, angiosperm, and gymnosperm. Tracheophyta, spermatophyta, and then tracheo, Tracheo. Tracheophyta, Phyt, tracheophyta. Is it tracheophyta? Yeah, it is tracheophyta. Presence of vascular bundle. Presence, Presence, presence of vascular bundle. Presence of vascular bundle, bundle. Presence of vascular bundle. Pteridophyte, Phyt, pteridophyte. Then we have gymnosperm, gymnosperm. Angiosperm. Okay. Pteridophyte is gymnosperm and angiosperm. Tracheophyta is we have pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm. Presence of vascular bundle. Okay. Female sex structure, archegonium. Bryophyte, pteridophyte, and gymnosperm. But where is algae? Oogonium. Agapparatus, angiosperm. Okay. Archegonium and antheridia are absent in angiosperm. This is important point. Female sex organ. FEMALE, female sex organ. For algae, ALGA. For algae, it's oogonium. Female sex organ is oogonium in algae. Then in Bryophyta, then we have pteridophyte, and then we have gymnosperm, right? Gymnosperm. These three have archegonium, archegonium. Then fifth, angiosperm. Algae, oogonium, angiosperm,
egg apparatus. Egg apparatus. APPARATUS. Egg apparatus. Archegonia and Antheridia are absent in angiosperm. Archegonia and Antheridia. Antheridia are absent. ABSENT absent. Are absent in angiosperm. Okay, yeah, done. Thero, it's not thero, it's Tracheophyta, I guess. Yeah, Tracheophyta. Except algae, everyone is an algae and bryophyte, everything is Tracheophyta, like Pteridophyte, Gymnosperm and Angiosperm. Excuse me. Female sex organs are absent in female sex organ. For algae it is Oogonium, for Pteridophyte and Gymnosperm it is Archegonium, and then for Angiosperm it is egg apparatus. Angiosperm do not possess Archegonia and Antheridia. Okay, got that. Cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy, those which have hidden sex organ like algae, bryophyte and pteridophyte. And phanerogamy, those whose sex organs are visible, like angiosperm and gymnosperm. Like angiosperm and gymnosperm, they are phanerogamy. Okay. Embryophyta, zygote undergo mitosis to form embryo. This does not occur. Embryophyta is not present in algae, as they undergo zygotic meiosis. Okay, remaining they undergo zygotic mitosis. That's why they are known as Embryophyta. Oh, there are exceptions of algae like fucus, kelps, ectocarpus, and fucus. How can I remember all the exceptions? Fucus, kelps, and then fucus, kelps, ectocarpus, and volvox. Am I right? ना, volvox एम्ब्रियो फाइटा नहीं हो सकता, उसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है. What is it? Polysiphonia. It's polysiphonia. Fucus, polysiphonia. Fucus, polysiphonia, and ectocarpus. Polysiphonia. Okay, red algae. Polysiphonia. Got it. Diplontic, gymnosperm and angiosperm. Gametophyte. Yeah, gametophyte. And sporophyte. Sporophyte is dominant stage. Gametophyte is reduced stage. Okay. Sporophyte, they has large number of cells, more number of cells. Gametophyte, less number of cells, but they are dependent on sporophyte and non-green. Okay, they are dependent on sporophyte and non-green, whereas sporophyte are multicellular and has large number of cells. Sporophyte have large number of cells. Okay, multicellular, large number of cells. Gametophyte, few number of cells, dependent, and they are non-green. Haplodiplontic. Got it. Bryophyte and pteridophyte, right? Life cycle, both gametophyte and sporophyte are multicellular. In haplodiplontic life cycle, both gametophyte and sporophyte has multicellular. Both are multicellular. Okay. Pteridophyte, dominant stage is sporophyte. In bryophyte, dominant stage is gametophyte. That's it. Here I have now algae, bryophyte, pteridophyte, and angiosperm. Gymnosperm and angiosperm are diplontic, whereas bryophyte and pteridophyte are haplodiplontic, and algae is haplontic. But the plant body, haploid.
plant body, bryophyte and algae. Pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, diploid plant body. Dominant sporophyte, that's why they are diploid plant. Dominant stage gametophyte, that's why they are haploid plants. Okay, all algae have a haplontic life cycle with the exception of fucus. Diplontic, आयो इतना सारा exception कैसे पढ़ूँ मैं, कैसे? Fucus, diplontic, kelps, ectocarpus and polysiphonia, haplodiplontic. I can't. इतना सारा एक्सेप्शंस के ऊपर एक्सेप्शंस डाल देते हैं ये लोग. Algae bryophyta, we have algae bryophyte, PHYT, HEPLOID, haploid plant. Then we have Pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. Pteridophyte, PHYT, Pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. Then we have Pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. They have diploid, they are diploid, diploid plant, diploid, they are diploid plant. Okay, diploid plant, yeah, diploid plant. Okay, dominant sporophyte, dominant stage gametophyte, dominant stage. 1 hour break. Those who want to take break they can. 1 घंटा कंप्लीट हो गया, ब्रेक ले सकते हो भाई, हो जाएगा. निमोनिक्स बना लो, नहीं बनता मुझसे. एल्गे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. पता है मैंने क्या किया, अभी तो विंटर है ना, तो गरम जो गैस पे होता है उसको ना मैं ना किसी और कपड़े से नहीं उठाती, तो मैं हमेशा अपने कपड़ों से ऐसे करके उठाती हूँ ना, इससे पकड़ के, क्योंकि मैं जो भी पहनती हूँ लंबा लंबा पहनती हूँ. तो ये देखो जल गया, कैन यू सी. आगे से ऐसा नहीं करूँगी, आगे से मैं कपड़ा से उठाऊंगी, अपने कपड़ों से नहीं. Algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. Pterido, gymno and angiosperm have haploid plant body. Do they have haploid plant body? They have a diploid plant. They are diploid plant. Algae and bryophyte, haploid plant. Bryophyte and pteridophyte, haplodiplontic. इतना सारा मेहनत करना पड़ता है यार. Pteridophyte, haplodiplontic, haplodiplontic. Pteridophyte and bryophyte, haplodiplontic. Algae, haplontic. Gymnosperm, diplontic. Dominant stays, dominant sporophyte. Dominant stays gametophyte. All algae have a haplontic life cycle with the exception of fucus. Fucus का क्या होता है, diplontic होता है. अच्छा, तो उसको भी diplontic में डालना पड़ेगा ना. क्यों लिखा स्टार्ट? ओह, यहाँ पर ना पॉज हो गया है, यहाँ पर थोड़ा विजिबल है. 1 मिनट में फिक्स कर लेती हूँ, ऑल मैसेजेस कर देती हूँ ना, शायद आ जाएगा. कितने मिनट का ब्रेक ले? पूरे 15 मिनट का लेते हैं, 1 घंटा पड़ा है. Diplontic, angiosperm and fucus. Fucus algae, ALGAE, algae. Okay. Fucus, ectocarpus, kelps, polysiphonia. And then we have kelps, ectocarpus, polysiphonia. Fucus, kelps, ectocarpus and polysiphonia. तभी मैं सोचूं. Polysiphonia, Siphonia, kelps, Polysiphonia, kelps and ectocarpus. Polysiphonia, kelps and ectocarpus, haplodiplontic. Okay. Polysiphonia, kelps, ectocarpus.
Polysiphonia, Kelson, Ectocarpus. Polysiphonia, Kelson, Ectocarpus. Haplodiplontic. Red algae, brown algae. Brown algae, okay, Kelps, Ectocarpus and Fucus. Brown algae, okay, got it. Fucus. Fucus is Diplontic. Fucus is Diplontic. Fucus, कहाँ गया Fucus? Fucus is Diplontic. Fucus Diplontic algae. These are also algae. ALGE. Kelps, Polysiphonia, Ectocarpus. Kelps, Polysiphonia, Ectocarpus. They are also. They are also. What are they? I forgot. I completely forgot. They are also algae. Female cone, Megasporo. Okay, Megasporangiate. Megasporangiate or female strobili. Dominant stage gametophyte haploid plant okay algae bryophyte pteridophyte ये तो हो गया ना आगे वाला पढ़ते हैं पोलीएम्ब्राइन में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड सिंगल सेल ये धरती को देखते ही ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ मुझे अभी साफ करना होगा वो बुड्ढी ना गिर के ना ऊपर से सीढ़ी से गिर के नीचे गेट पे आ जाए बुड्ढी कहीं की फीमेल कौन मैंने अम्मा को नहीं बोला भाई देवे अगर तुम लोगों को गलत फहमी ना हो इसलिए बोला मेगास्पोरोफिल स्पाइरल ओके मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल स्पाइरल मेगास्पोरोफिल स्पाइरल मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल ओव्यूल न्यू सेल्सको एउटा सेल मोडिफाइड सेल लेखी वर्ष एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल 2n meiosis okay present inside integuments and megasporangia new cells meiosis 4 megaspores haploid okay 3 degenerate 1 functional megaspore female gametophyte produce करेगा अच्छा ये वाला थोड़ा वो है important है वैसे मैं भूल ही जाऊंगी इतना है ना लगता तो है कि मैं भूल ही जाऊंगी अगर ये मैंने थोड़ा आज किया तो उत्तम ही हो जाएगा मैं पहले ना ये फ्लोर क्लीन कर देती हूँ मुझे देखते ही गुस्सा आ रहा है इस फ्लोर को यू टेक ब्रेक में तो अभी आया आई विल कंटिन्यू गुड लक ब्रो अस्तगफिरुल्लाह Alex, are you there? Alex, bhai, are you there? కూర్చో పైన కొన్ని చూడి ఉన్నాయి ఆ నోయ లేకపోతే బాయ్ కాముషా బాయ్
मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, रुको। मुझे ना यहाँ पर पोछा भी लगाना है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, उन्होंने उनका गंदा सा स्लीपर यहीं पर फेंका ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर छोटी होती तो भी मैं बोल देती कि अपना स्लीपर बाहर ही रखो, अंदर पहन के मत आओ, लेकिन मैं नहीं बोल सकती ना, वो बड़ी है। मेरा सॉक्स भी गंदा हो गया उनकी वजह से। पता नहीं कहाँ कहाँ पर घूम की चल के आई होगी, इतनी बुढ़ी है, गुस्सा आ रहा है।
गुस्सा आ रहा है। इन लोगों का सर फोड़ दूं। गंदगी फैला के रखा है। कीड़े मकोड़े सब कुछ यहीं पर। चुप हो जाते। हाँ। Ow! Ouch! Oh shit! कत्रो चोटले हातै ठोक्यो। मरि मेरो भुइँपछि कोही न कोही चप्पल लिएर पसिहाल्छ, कोही न कोही चप्पल लगाएर पसिहाल्छ। अक्सिनले दिनुहोस् नि, कतिपल्ट पुस्नु होला उहाँको गन्दी चप्पल कहाँ कहाँ घुमाएर टोइलेटमा पनि त्यही चप्पल लगाएर जान्छ होला मेरो प्रोफाइलमा त भित्र मनभरमा गाली दिँदै अब त्यस्तै छ। गन्दी बुढी नि भुइँमा यता मेरो
भुइँ भएको जग्गामा त ठिकै छ नि चप्पल लगाएर राख्नु होइन केही गर्दिनँ नि प्रोफाइलमाथि पनि उसको चप्पलै लगाएर चलिजान्छ हौ होइन हौ आमालाई आमाले त गाउँदै गरिरहेको छ नि आमाले लायो भने नि म आमाको सातो खाइदिइहाल्छु नि गन्दै बुझ्छ त बुढी झौडी बुढीको मैला सोर्दा सोर्दा मेरो रात गयो फेरि मैला बसेको भन्छ अब मरिसक्यो होला के भएको छ
लगा लिया मैंने पोछा, अब फिर से पढ़ाई करते हैं। ब्रेक में भी पोछा लगाना पड़ा। पता है एलेक्स, जो तुमने ग्रेप्स बोला था ना, वो ग्रेप्स मैंने खाया और आई थिंक मुझे फिर से वो आ रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है। लेट्स स्टडी। हाय बाबा, हाय ट्रोय। तुम हो क्या बाबा? आर यू देयर बाबा? हाय आकांक्षा। इज इट आकांक्षा? आकांक्षा। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके बाबा, 60 मिनट करते हैं। मैं थकी गई पोछा लगाते लगाते। ओके आकांक्षा। When I was in Assam, तब वहाँ पर भी थी कोई आकांक्षा, नहीं एस्पिरेंट। पढ़ाई करते हैं अब। आई थिंक मैं भूल गई बाहर का दरवाज़ा लगाना। आई हैव टू लॉक इट। एलेक्स आर यू देयर? एसबी आर यू देयर? निधि एंड एसबी, तुम दोनों तो नहीं होंगे, निधि एंड एसबी तो आज है ना। आर यू देयर शुभम? एलेक्स आर यू देयर? निधि आर यू देयर? आज नोनू और शुभम तो नहीं आएंगे। एलेक्स आर यू देयर? है तो एलेक्स यहाँ पर। रुको मैं एलेक्स को बताती हूँ। दोस्त के साथ है शायद। कॉल तो दिखा होगा लेकिन ऑनलाइन नहीं आया।
नोटिफिकेशन से देखा क्या एलेक्स ने? क्लोवर लीफ के लिए, हाँ क्लोवर लीफ के लिए 60 मिनट का है। ओके, गुड लक एवरीवन। सेकंड स्लॉट करके लिखना है ना मुझे, मैं लिख देती हूँ, रुको। हेलो विवेक जी, इमा जी, विवेक जी, हाँ बहुत ही शातिर हो, मतलब कि मैं जो टेक्स्ट करती हूँ वहाँ पर पढ़ते रहते हो ना ऊपर से। आई गॉट यू एलेक्स। सेकंड स्लॉट है ना ये? हाँ सेकंड स्लॉट। सेकंड स्लॉट 2 लिखना था। क्या लिख रही हूँ? SLOT स्लॉट 2 कितने मिनट का? 60 मिनट का। अस्तगफिरुल्लाह। सिक्सटी मिनट, हाँ। Alex can update. Upti. What are you typing, Baba? 60 minute begins. Okay, BEGINS. Good luck everyone. हाँ 1 hour का ही रख रही हूँ विवेक। Let's do it. कर दिया है अपलोड। Alex, can you tell me how to deal with physics if you are good at it? Alex भाई बता दे अगर भागा नहीं है तो। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, टाइमर। You guys can chat in the comment section though. Coronal incident. कौन सा कॉर्नल इंसिडेंट? वो कोकोनट वाला? वो खाने के बाद ना मेरा पूरा, oh you won't understand right? Okay, after eating that coconut my tongue became red, even my lips, it was colored. Can you read it? Gift of whom is it then? Yeah, it was. Well, this one is gift, but I'll write it. Message. What is message? What message? Message. MGSA. MGSA. What do you mean by MGSA? Let's start on. मेरा ये बार बार निकल रहा है बेचारा। MG साहू। इसको ना मैं ऐसे नहीं रखते हुए, निकल जाएगा वरना ज़्यादा फोर्स लगाने पर। शायद ऐसे करने से ठीक हो। इससे तो और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। ब्लू पेन है। गुड लक एवरीवन। मैं टाइमर स्टार्ट कर दे रही हूँ। ओके,
I don't think Alex is there, Baba. We have to text him in Telegram. You can text him. Good luck, everyone. Oh, he's there. Physics घर क्या है? मैं पढ़ रही हूँ, ओके? तुम लोग बात करो. अब वैसे पढ़ने से पहले एलेक्स एक जोक ही मार दो. कोई कुछ भी बोलो ना, एलेक्स उसका जवाब देगा फनी वे में. किसी को कुछ नहीं बोलना क्या? इतना पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया एलेक्स. Female cone. Megasporangiate or female strobili. Megasporangiate or female strobili. Megasporangiate or female strobili. Megasporophil spiral. Megasporangia ovule. Ovule megasporangia, okay? Ovule 2n megasporangia. Nucellus present inside the integuments in megasporangia. Megasporangia is ovule. Megasporophil, megasporangia, integuments, nucellus. MMC, megaspore mother cell undergoes meiosis to give 4 haploid cell. Megaspore mother cell 2n meiosis, undergo meiosis to give 4 haploid megaspores. Okay, 3 degenerate, 1 functional megaspore undergo, I don't know, meiosis or mitosis, and to give female gametophyte, non-green, female gametophyte, non-green in cone. Okay, this is gymnosperm. Non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Non-green, multicellular, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. एलेक्स देखो ना, लोकेशन मांग रहा है, इसका कुछ जवाब दे दो प्लीज. One cell of nucellus acts as MMC. MMC undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. 3 generate 1 functional megaspore. N, okay. Megaspore, female gametophyte. Megaspore, female gametophyte. Megaspore, female gametophyte. Oh my goodness. Megaspore, female gametophyte. Megaspore, single cell, female gametophyte. Non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Megaspore, female gametophyte. Non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Non-green, multicellular, dependent on sporophyte. It's okay, ma. It's okay. 1 functional megaspore and मुझे हंसी आ रही. It's okay. One functional megaspore and gives female gametophyte, which is non-green, multicellular, dependent on sporophyte. मैंने दिमाग में कुछ सोच दिया. Leave it. It's okay. It's okay. It's okay. कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा.
One cell of nucellus act as megaspore mother cell. MMC undergo meiosis to form 4 haploids. Megaspore female gametophyte, which is non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Megaspore female gametophyte, non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Megaspore undergoes नहीं, कुछ पर्सनल नहीं था. पढ़ाई करते सब लोग. टाइमर ऑन है. 5 मिनट हो गया. शुभम कोपचे में जाके बता दे निधि को, नोनू को बता दे क्या चल रहा है अभी. 3 megaspore degenerate, 1 functional. Okay. And megaspore single cell female gametophyte, non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Note: endosperm developed from female gametophyte. Number 2, endosperm of gymnosperm, haploid and formed before fertilization. Okay. Endosperm developed from female gametophyte. Endosperm of gymnosperm, haploid and formed before fertilization. It is formed before fertilization. क्या हुआ एलेक्स? 1 functional megaspore and megaspore female gametophyte, non-green, multicellular, dependent on sporophyte. Megaspore female gametophyte. Okay. Megaspore female gametophyte, megaspore single cell female gametophyte, non-green, multicellular, dependent on gametophyte, dependent on sporophyte. Female gametophyte, non-green, multicellular, dependent on sporophyte, dependent on. तुम हंस रही हो तो मैं सोचा रो लूं. नहीं, अगर मैं हंसी तो तुम्हें भी हंसना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे मेरे खाने से तुम्हारा पेट भरता है, तो मेरे हंसने से तुम्हें भी हंसी आनी चाहिए. नहीं, उससे क्यों हंसूंगी. वो तो नॉर्मल था ना. आई कीप ऑन टेलिंग हर कि गो एंड मैसेज हिम इन टेलीग्राम. हम जीने क्या यहाँ से, हम जाएं क्या यहाँ से. क्यों? यू आर स्टडिंग राइट. डोंट लिव. Multicellular, dependent on sporophyte. एलेक्स को पता है, क्योंकि एलेक्स का ही यहाँ पर टेलीग्राम पे मैसेज आया था ना, वही देख के हंसी. नहीं, आप पर्सनल बात कर रही हो. कुछ पर्सनल नहीं है, ये सारे मेरे दोस्त हैं. ने अबे पढ़ लो यार. आज मैंने बहुत ही घटिया न्यूज़ सुना है. मैंने लिखा भी है, ऊपर जाके देखो. My friend got selected in some kind of stuff. आप तो पढ़ा रहे हो, बता सकते हो आप क्या पढ़ रहे हो. मैं अभी ना प्लांट किंगडम पढ़ रही हूँ. विक्रांत, मेरे फ्रेंड को कुछ नहीं मिला, पढ़ देते हैं. दैट डजंट हर्ट द मोस्ट. आई एम हैप्पी कि उसको मिला. लाइक वो तो अच्छी बात है ना, लेकिन ना आंटी आके बड़ा चढ़ा के बोल रही थी. To see the way that aunt was explaining my mother about that incident in my presence, that did. Let's study, okay? मैं वो पॉज करना भूल गई. I mean, what are you preparing for, JEE? No, I'm preparing for NEET. Let's start. Green multicellular, dependent on sporophyte.
One cell of nucellus act as MMC, megaspore mother cell. MMC undergo meiosis to form 4 haploid megaspore. One cell of nucellus act as MMC, megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. और ये jealous feels करवाता है वही. It starts. Good luck everyone. वो करवाना नहीं चाहती थी लेकिन मैं हो गई. She was just explaining my mom कि ऐसा हुआ ऐसा करके. और वो मुझे भी पूछ रही थी कुछ questions, but I left and came here. One functional megaspore and megaspore female gametophyte, megaspore single cell, female gametophyte non-green multicellular dependent on sporophyte, female gametophyte non-green multicellular dependent on sporophyte. Okay. Endosperm develop from female gametophyte. Endosperm of gymnosperm haploid and formed before fertilization. Okay, 2 or more archegonium, female gametophyte, megaspore to female gametophyte, then two or more archegonium or archegonium. Pollen releases gamete near the mouth of archegonia. Pollen releases gamete near the mouth of archegonia ovule. Megasporangia, ovule, zygote, female gamete, seed, female gametophyte, zygote, seed. Megasporangia, ovule, zygote, female gametophyte, seed. 4 haploid spores. Okay, 1 functional megaspore and megaspore, female gametophyte, non-green multicellular dependent on sporophyte. 2 or more archegonium, ovule. Pollen releases gamete near the mouth of archegonium. Zygote, formation of zygote. Zygote. Okay, megasporangia, ovule, female gametophyte, seed. Okay, gymnosperm do not have independent or free living existence of male and female gametophyte. Gymnosperm do not have free living independent existence of female gametophyte. बेचारा मेरे एलेक्स मेरे लिए स्टैंड ले रहा है. Female gametophyte, endosperm and with sporangia, embryo 2n, integuments give seed coat, endosperm, seed, embryo 2n, next generation sporophyte, integuments, seed coat, endosperm, seed, endosperm, embryo, integuments, seed coat, embryo, sporophyte of next generation 2n, embryo 2n, next generation sporophyte. Female gametophyte, endosperm and with sporangia, endosperm and within sporangia, endosperm and within sporangia. Okay, within sporangia. Female gametophyte, embryo 2n, integuments, give seed coat, endosperm, embryo, next generation sporophyte, seed, integuments, seed coat. Within the sporangia. She is not my best friend, like classmate थी, but good friend. But मैं friend को मैं भी count नहीं करती उसे. फिर से टाइमर पॉज किया है हमने ना. इस सेशन में 5 बार टाइमर पॉज किया होगा. पढ़े
distinct human seed coat, embryo to an next generation sporophyte seed, endosperm. Okay. Summary. Megasporangia ovule. Alex, मेरा वाला वो दो क्लोवर लीव्स, ताकि मैं ना डिस्ट्रैक्ट भी ना हुए पढ़ूं. मुझे आज कैसे भी करके प्लांट किंगडम तो खत्म करना है. Megasporangia ovule. Twin MMC modified nucleus undergoes meiosis. MEIOSIS. Thank you. Megasporangia ovule to MMC modified nucleus. Okay. Megaspore mother cell undergoes meiosis. Megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 haploid cells. 3 generate 1 functional megaspore. 3 degenerate megaspore and okay. 3 degenerate and 1 functional megaspore. फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है. फीमेल गैमेटोफाइट नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर और डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट से एंडोस्पर्म बनेगा हैप्लॉइड बिफोर फर्टिलाइजेशन. ओके. आर्किगोनियम. आर्किगोनियम के मुंह पे पॉलन ग्रेन रिलीज होगा. मेगास्पोर. ओके. आर्किगोनिया और पॉलन ग्रेन फ्यूज होके जाइगोट बना देगा. जाइगोट से सीड, सीड से फिर वही स्पोरोफाइट. स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स नहीं, स्पोरोफाइट आता है. स्पोरोफिल. मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल और ये वर्गा माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल. मेल कोन मेगा माइक्रोस्पोरोफिल 2n, माइक्रोस्पोरेंजिया 2n, मियोसिस. माइक्रोस्पोरोफिल 2n, माइक्रोस्पोरेंजिया. मैं तो स्क्रीन पे ही नहीं देखती हूँ अब तो, मुझे हंसी आती है यार. मैं कुछ और लगाती हूँ. मैं यहाँ पर मैंने स्क्रीन बंद करके टेलीग्राम खोल लिया. वो भी पहले ही तुम्हारा मैसेज पॉपअप हो रहा है. अच्छा, रिफ्रेश करती हूँ. लेट्स स्टार्ट. ओके. एकदम सीरियस बन के. माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, मियोसिस, मैनी माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोरोफिल 2n होता है. माइक्रोस्पोरेंजिया n होता है. नहीं, ये भी 2n होता है. ओके. मियोसिस माइक्रोस्पोर्स n, मैनी माइक्रोस्पोर्स. ओके. माइक्रोस्पोरेंजिया 2n, माइक्रोस्पोर. एलेक्स प्लीज पढ़ने दो यार. मैं तुम्हें बाद में आके सब कुछ बताती हूँ क्या क्या हुआ. अभी क्यों हंस रही हूँ वो भी बताऊंगी. अभी पढ़ते हैं ना प्लीज. मैं डाइवर्ट हो रही हूँ तुम्हारा टेक्स्ट देख के. Microsporophil 2n, Microsporangia 2n, meiosis, many microspores. Microspore and Microsporangia. Okay, they are haploid. Microsporophils, then Microsporangia. Microsporophils, Microsporangia undergo meiosis. Microsporangia undergoes meiosis. Microsporangia undergoes meiosis. Microsporangia undergoes meiosis. Microspores and microspores and microsporangia, pollen grain and multicellular gametophyte. Development of pollen grain
place in microsporangia. Development of pollen grain takes place in microsporangia. Microsporangia. Meiosis, many microspores and microsporophyll 2n, microsporangia 2n, meiosis, microspores and microsporangia, pollen grain and multicellular gametophyte. Development of pollen grain takes place in microsporangia. Okay, we have microsporophylls, then microsporangia. Meiosis undergoes meiosis to form microspores. They are haploid. Okay, they are haploid and many. Okay, these forms pollen grain and they are multicellular and gametophyte. 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 Development of pollen grain takes place in microsporangia. Pollen grain and multicellular gametophyte. Development of pollen grain takes place in microsporangia. Microsporangia में pollen grain develop होता है. Multicellular and gametophyte. Gymnosperm, double fertilization absent, endosperm and ovule unitechnic. Endosperm develop before fertilization. Endosperm develop before fertilization. Before fertilization. Endosperm develop before fertilization. Endosperm develops before fertilization. Okay. Double fertilization absent. Endosperm and ovule unitechnic. Endosperm develops before fertilization. Angiosperm double fertilization present. Bitechnic. Ovule bitechnic. Endosperm 3n. Triploid हुन्छ नि त. Endosperm form after fertilization. Endosperm is formed after fertilization. Okay. Endosperm is formed after fertilization. Polyembryony, formation of more than one ovule inside a single cell inside a single seed. Okay. Formation of more than one embryo inside a single seed. Example, orange. There are types of polyembryony like simple polyembryony, and then cleave polyembryony, and then adventive polyembryony. Okay, simple polyembryony, cleave polyembryony, and adventive polyembryony. Simple polyembryony due to fertilization of many eggs. Due to fertilization of many eggs. Example, Pinus 2 to 8 archegonia. अरे हर एक तो प्रोड्यूस करेगा ही ना, तो 8 Pinus 2 to 8 archegonia. Simple polyembryony, more than one fertilization of more than one egg. Due to fertilization of many eggs. Example, Pinus. True polyembryony common due to splitting of embryo tissue. Okay, cleave polyembryony is the true polyembryony due to splitting of embryo tissue. Due to splitting of embryo tissue. True polyembryony common due to splitting of embryo tissue. Adventative formation of extra embryo from diploid cell. Example, rosette cells. Formation of extra embryo from diploid
youngness is plant kingdom still going on, या तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों ने पोछा लगाया उसके बाद थोड़ी हंसी मजाक हो गई दोस्तों से. Still plant kingdom. Yognesh. Adventitive, formation of extra embryo from diploid cell. Example, rosette cell. Adventitive, polyembryony, formation of extra embryo from diploid cell. Diploid cells, okay. Extra embryo, formation of extra embryo from diploid cell. Example, rosette cell. Due to fertilization of many eggs, pinus 2 to 8 archegonia, cleave. True polyembryony, common polyembryony, okay. Due to splitting of embryo tissue. Formation of extra embryo from diploid cell. Example, rosette cell. Formation of extra diploid cell. Formation of extra embryo from diploid cell, okay. Formation of embryo from diploid cell, okay. Adventitive, okay. Rosette cell. Formation diploid cell से एक और embryo बन रहा है तो उसे adventitive बोलते हैं. अगर एम्ब्रियो टिश्यू स्प्लिट होने के बाद 2 एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे क्लीव एम्ब्रियो, पोलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं. ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी, ओके, कॉमन टाइप का ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियो टिश्यू. अगर एक से ज़्यादा सीड है और आहा नरेंद्र मोदी जी आ गए. अरे पढ़ते हैं ना यार, कोई ना कोई आके हंसता है, मुझे भी हंसने का दिल करता है. सिंपल, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मैनी एग्स, पाइनस 2 to 8 archegonia. Due to fertilization of many eggs, pinus 2 to 8 archegonia. 2 से 8 archegonia, okay. चैट्स ऑफ कर दो. इट्स ओके नरेंद्र, चैट्स ऑफ कर दो. ब्रेक में ओपन करना. नोनू अब तुम बोलो, चैट्स क्या करूं. नोनू आर यू देयर. साइकास जिंको साइकास जिंको biloba. Cycads plus pinus conifers, okay. Connecting link between zinco biloba. Living fossils, cycas, zinco, and then cycas, zinco, and metasequoia. Cycas, zinco, and metasequoia. Cycas, zinco, 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 and metasequoia. Zinco biloba, connecting link between pinus, conifers and cedrus. Conifers and cycads, not cedrus. अरे भाई तू गलत कर देगी. Cycads plus pinus. Cycads plus pinus. नोनू आर यू देयर. चैट्स ऑफ करने के लिए बोल रहा है शुभम, क्या करूं. Cycas, zinco, metasequoia. Cycas, zinco, metasequoia. These are living fossils. Cycas, zinco, and metasequoia. Cycas, zinco, and metasequoia. Okay, zinco biloba, connecting link between cycads and conifers. Cycads, is it cycads? Yeah, cycads and conifers. Pinus gerardian, edible seed होता है ना. Pinus gerardian, chilgoza. Pinus gerardian, edible, chilgoza seed. Chilgoza edible. Pinus gerardian, chilgoza edible. Pinus gerardian, chilgoza edible. Haploid and diplontic life cycle. Gametophyte, mitosis, gamete, fertilization, sporophyte, zygote. Zygotic meiosis, example volvox. Example zygotic meiosis को example हो volvox, okay. Gametophyte, mitosis भएर gamete बनिन्छ, fertilization भएर sporophyte या फिर zygote बनिन्छ 2n. Zygotic meiosis, example volvox. Spore बनिन्छ त्यहाँदेखि mitosis, okay. Algae life cycle is haplontic. Zygote is only diploid stage. Algae life cycle is haplontic. Zygote is only diploid stage. Zygotic meiosis occurs in haplontic life cycle. Zygotic meiosis occurs in haplontic life cycle. Algae life cycle is haplontic.
Zygote is only diploid stage. Zygote is only diploid stage. विवेक भी बोल रहा है कि चैट ऑफ कर दो, तो कर देती हूँ ना, लेकिन मैं नोनू को पूछ रही थी. नोनू ने अगर हाँ हाँ बोल थी ना चैट ऑफ, है ना शुभम? बिना नोनू को पूछे कैसे करे? कहाँ गए ऑफ करने वाला? चैट ऑफ नहीं होने वाला, वो कहा था कम्युनिटी मॉडरेशन. ओके, कर दिया ऑफ. Algae life cycle is haplontic. Zygote is diploid. Zygote is diploid stage. Zygotic meiosis occurs in haplontic life cycle. Okay. Algae, haploid plant, haplontic stage. Gametophyte is the dominant stage. Okay. Gametophyte, green, photosynthetic, and free living. In algae, in the case of algae, free gametophytic, and photosynthetic. Gametophyte, green, photosynthetic, free living. Green, photosynthetic, and 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 free living. Okay. Diplontic. Both gametophyte and sporophyte. Stages multicellular. Both gametophyte and sporophyte stages multicellular. Both gametophytic and sporophytic stages multicellular. Mitosis, gamete, fertilization, zygote. Sporophyte 2N, meiosis, spores, and then again and mitosis, gametophyte. Okay. Bryophyte, haploid plant, dominant stage, gametophyte. Pteridophyte, diploid plant, dominant stages, sporophyte, gametophyte, reduce lifespan. Okay. Bryophyte को haploid plant हो, dominant stage gametophyte हुन्छ. Pteridophyte को diploid plant, dominant stage is sporophyte, gametophyte, reduce lifespan. Diplontic, gymnosperm, angiosperm, fucus algae, reduced dominant. Diplontic, low cell number of gametophyte dependent non-green. Sporophyte 2 and high cell number, multicellular. Basic concepts. Embryophyta, Phyte, phyta. Okay. Embryophyta occurs in diplontic and haplodiplontic life cycle. Zygote, mitosis, embryo. Algae is not embryophyta due to zygotic meiosis, but the exceptions are fucus. Yeah. Then we have kelps. Fucus, kelps, ectocarpus and polysiphonia. Fucus, ectocarpus, kelps and polysiphonia. क्योंकि because fucus भी diplontic है ना, और haplontic में polysiphonia, kelps and ectocarpus आते हैं. Embryophyta, zygotic, mitosis. Bryophyta, Pteridophyta, gymnosperm and angiosperm are embryophyta. Okay. Bryophyte and Pteridophyte, haplodiplontic. Gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm and angiosperm क्या है? Gymnosperm and angiosperm है हम लोगों का diplontic. Zygotic meiosis, haplontic life cycle, not embryophyta. Haplontic life cycle, not embryophyta. Okay. Cryptogamy तो नहीं होगा. I'm pretty sure. Crypto तो नहीं होगा. Crypto. It's not crypto. It's crypto. Isn't it? It's cryptogamy and phanerogamy. Exactly, not a crypto. It's crypto. It's crypto, bro. It's cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy, hidden sex organ. Phanerogamy, naked sex organ. Naked sex organ. Example, angiosperm and gymnosperm. Cryptogamy, algae, bryophyte and pteridophyte, hidden sex organ. Spermatophyta, those who produce seeds like angiosperm and gymnosperm. Okay. Trachyophyta कौन होता है? जिसके पास vascular tissue हो. तो pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. फीमेल सेक्स ऑर्गन, एल्गी में होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन हम लोगों का ओगोनियम. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में, हाँ ब्रायो टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम होगा. एंजियोस्पर्म में एगापैरेटस. इसमें आर्किगोनियम नहीं होगा एंजियोस्पर्म में. इनफैक्ट एंथ्रिडिया भी नहीं होता है. ओके. एल्गी एंड ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, वेराज रिमेनिंग जो भी है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उन लोगों की प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होता है. दैट्स इट.
डचसटा, डचसटा। एग्जाम्पल्स भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं टेस्ट देती हूँ, पता नहीं कितना आएगा, देखते हैं। ओके 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 पोके। हाँ, ये तो मुझे याद करना पड़ेगा एक बार पढ़ के, इसे ही तो मुझे याद नहीं होगा। टेरिडोफाइट में इतना कम दिया है क्यों? ओके, टेरिडोफाइट पहले करते हैं ना। टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सोइल बाइंडर्स। ओके, टेरिडोफाइट का पहले एग्जाम्पल तो नोट कर लूँ। पहले ही आया हम लोगों का हॉर्सटेल एंड फर्न्स, हॉर्सटेल एंड फर्न्स, हॉर्सटेल एंड फर्न्स। ओके, टेरिडोफाइट, राइट? PTE, टेरिडोफाइट, PHYT, टेरिडोफाइट। ये वाला पोर्शन मुझे बहुत करने की ज़रूरत है। टेरिडोफाइट। The pteridophyte includes horsetail and ferns. HORS, horsetail, TAIL, horsetail and ferns. FERNS, ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem. Okay, first terrestrial plant to possess xylem and phloem, vascular tissue. You shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places. Okay, cool, damp and shady places. Though some may flourish well in sandy soil condition. Cool and damp places, pteridophytes, right? Yeah, cool and damp places, shady places. Though some may flourish well in sandy soil conditions. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophyte plant body. However, in pteridophyte, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root. Main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem, and leaves. These organs possess well differentiated vascular tissue. These organs, root, shoot, and root and shoot, root, stem, and leaves. These organ possesses well differentiated vascular tissues. The leaves in Pteridophyta are small microphyls as in Selaginella, or large macrophyls as in ferns. Okay, microphyls, small leaves, Selaginella. Selaginella, NELLA, Selaginella. इतना सारा वो है, मैं कैसे याद करूंगी? इतना सारा, इतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। मैक्रोफिल्स, ferns, PHYLLS, fills, ferns. Microphylls, Selaginella, and macrophylls, ferns. Okay, macrophylls, ferns. Microphyll, Selaginella. Macrophylls, ferns. The sporophyte bears sporangia. Okay, sporophyte bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages like sporophylls. Okay, the sporophyte bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. Okay, sporophyte. SPO. Is it Sporo? Yeah, it is Sporo, SPO. Sporo. I don't want to think about it, but I have to. Sporophyll, right? Sporophyte. Sporophyte है इसका नाम। क्या है? Sporophyte है। फिगर ये रहा तुम्हारा स्पोरोफिल। ये वाला sporangia. The sporophyte bears sporangia. Yeah, this is sporangia. Sporangia that is lift like sporophylls. These are sporophylls. Sporophylls. PHYLS. समझ में नहीं आया ना?
आया तो ये वाला स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, ये वाला हो गया तुम्हारा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होगा? स्पोरोफिल्स, लीफ लाइक structure, appendages. In some cases, spores may form distinct compact structure like strobili or cones. Okay, strobili or cones. Selaginella and equisetum. कहाँ कहाँ स्पोरोफिल्स ये बनाएगा? स्ट्रोबिली और कोन्स। स्पोरोफिल्स स्ट्रोबिली और कोन्स बनाएगा। EQUI, इक्विसेटम, इक्विसेटम, EQUI, EQUI, मुझे नहीं इक्वी, कुछ बात नहीं। इक्विसेटम, 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 एंड देन सिलाजिनेला। सिलाजिनेला करना तो है सिलाजिनेला। Silaginella equisetum, 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 silaginella, equisetum, silaginella, equisetum, silaginella. Okay, silaginella होगा एक equisetum, equisetum, silaginella. Silaginella and equisetum. Example, Silaginella and equisetum. Equisetum and Silaginella. The sporangia produce spores by meiosis in. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. Silaginella and equisetum. The sporangia produced spores by meiosis in spore mother cell. Sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. Sporangia, ये sporangia spores बनाएगा, हाँ, meiosis के थ्रू. The spore germinates to give rise to an inconspicuous. Okay. पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा है, क्या करूं? The sporangia produces spores by meiosis in spore mother cell. The spores germinate to give rise in inconspicuous, small but multicellular. The spore germinates to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloids and gametophyte. Free-living, mostly. हाँ, इतना सारा पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ोगी क्या? फेल होना है. Inconspicuous, okay, inconspicuous, small, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. Prothallus की बात Pteridophyte में, okay. The gametophyte requires cool, damp, shady places to grow because of the specific restricted requirement.
and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. The gametophyte bear male and female sex organ. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of antherizoid, the male gamete released from the antheridia, to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium results in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular, well-defined sporophyte, which is the dominant phase of two pteridophytes. In majority of the pteridophyte, all the spores are of similar kinds, such plants are called homosporous. Genre like Selaginella and Salvinia, which produces two kinds of spores, macro, large, and micro, small spores, are called heterosporous. Okay, होमोस्पोरस मेजोरिटी होगा, रिमेनिंग क्या होगा, हेट्रोस्पोरस. ओके, example of heterosporus, HETER, heterosporus, salvinia and selaginella, right? Salvinia and selaginella, Salvinia and Selaginella. Selaginella and Salvinia. Okay, Salvinia, Selaginella. GINEL, Selaginella salvinia, which produce two kinds of spores like macro, large, and microspores, are known heterosporous. The megaspores and microspores, macro, large, and micro, the megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. Megaspores, female, micro, female, okay, gametophyte respectively. The female gametophyte in the plants are retained on the parent sporophyte for variable period. The development of a zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. Okay, parent sporophyte. Female gametophyte is retained. Gametophyte, PH, phyte is retained, TAINAD. Female gametophyte is retained. Okay, this event is precursor to the seed habitat, considered an important step in evolution. The pteridophytes are further classified into four classes: Celopsida, Phenopsida, Lycopsida, and Pteropsida. Okay, four classes. Ayo, pteridophyte, PTER, pteridophyte. सबसे पहले कौन होगा? फेनोप्सिडा ना. Phenopsida, Pteropsida. Phenopsida, Pteropsida. Phenopsida, Pteropsida. Then we have Lycopsida. And then Pteropsida, Phenopsida. What is that? Lycopsida, Psilopsida. Okay, Psilopsida, Phenopsida, Pteropsida, and Psilopsida. PSILOP. Psilopsida, right? Yeah, Psilopsida.
Pteridophyte. Okay, this is Pteridophyte. मैं पहला क्लास ही भूल गई. 4 classes. First is Psilopsida, Phenopsida, Pteropsida. Phenopsida, Pteropsida, Lycopsida. Phenopsida, Pteropsida, Lycopsida, Psilopsida, Psilopsida, Phenopsida, Equisetum. Equisetum, 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 right? Phenopsida is Phenopsida, Equisetum, Pteropsida. Okay, इसमें तो ज़्यादा है ना Pteropsida. Dryopteris, 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 and then we have again, what is it? Dryopteris, Pteris, and Adiantum. Pteris, 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 and Adiantum, Adiantum, Adiantum. Dryopteris, Pteris, and Adiantum. Dryopteris, Pteris, and Adiantum. Dryopteris, Pteris, and Adiantum. Dryopteris, Pteris, and Adiantum. Adiantum, right? Silotum. Lycopsida, Silotum. Silotum, Silotum. Silotum, Lycopsida. क्या कर दिया? सिलोप्सिडा में लिखना था ये. PSILO सिलोटम. सिलोप्सिडा में सिलोटम होगा ना. क्या कर रही हो इमा? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम. हाँ, लाइकोपोडियम एंड सिलाजिनेला. लाइकोपोडियम एंड सिलाजिनेला. सिलाजिनेला, सिलाजिनेला, नीला. हेट्रोस्पोरस होते हैं ना. इक्विसेटम, होमोस्पोरस. ओके. फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, लाइकोप्सिडा, Lycopodium and Selaginella. Pteropsida, Pteris, Dryopteris, and Adiantum, right? Psilopsida, Sotum. Heterosporus, Salvinia and Selaginella. ये सिलाजिनेला का कितना ज्यादा एग्जाम्पल आएगा रे. देखो ना, यहाँ पर भी आ गया माइक्रोफिल्स लीफ में. फिर यहाँ पर हेट्रोस्पोरस में भी सिलाजिनेला ही आया है. Microphil, Selaginella, Macrophil, ferns, Selaginella, and then again Heterosporus, Selaginella and Salvinia. हाँ, ये तो याद रहेगा क्योंकि ये सिला आ रहा है जगह पर. सिला. यहाँ पर भी देखो स्पोरोफिल, स्ट्रोबिलाई और कोन्स. देखो सिलाजिनेला गया. आधे से ज्यादा में सिलाजिनेला है. आंसर होगा. मैं सब में सिलाजिनेला लिख के आऊंगी. फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड स्पोरोफाइट में. ओके. स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूस करेगा. स्पोरोफिल्स कभी कभी कोन और क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रोबिलाई भी फॉर्म करता है. एग्जाम्पल होगा तुम्हारा. एक तो सिलाजिनेला होगा, दूसरा होगा इक्विसेटम. सिलाजिनेला हर जगह है. इक्विसेटम, सिलाजिनेला, इक्विसेटम, सिलाजिनेला, इक्विसेटम, सिलाजिनेला. लाइकोप्सिडा, Lycopodium, Selaginella. Psilopsida, Silotum. Pteropsida, Diopteris, Pteris, Adiantum. Phenopsida, Equisetum. Selaginella and not Equisetum. यहाँ पर क्या रहेगा? Selaginella और एक Lycopodium, क्योंकि ये Lycopsida है. Lycopsida. तुम्हें इतना सारा एग्जाम्पल तो याद नहीं रहेगा इमा. तुम कुछ भी कर लूँगी. देखो ना, ये वाला होगा तुम्हारा सिलाजिनेला, टेरिडोफाइट. ये वाला तुम्हारा ये गंदा सा दिखने वाला ये सिलाजिनेला है. ओके. स्टेम है, लीव्स है, रूट्स भी है. सिलाजिनेला बोलते से. राइजोम है, ब्रांच है, इंटरनोड, नोड. स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस, नोड, इंटरनोड, ब्रांच, राइजोम. इक्विसेटम, दिस इज इक्विसेटम. फॉर्न एंड साल्विनिया, साल्विनिया. Micro,
हेट्रोस्पोरस है, ये लोग क्या है, हेट्रोस्पोरस, नॉट होमोस्पोरस बट हेट्रोस्पोरस. ओके, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया. हेट्रोस्पोरस. ओके, दिस इज इक्विसिटम. घोड़े की पूंछ जैसी लग रही है ना. इक्विसिटम, सिलाजिनेला. Selaginella, leaves, stem, roots, rhizome, branch, internode, node, strobili. These are equisetum. Equisetum, Selaginella, Salvinia, and fern. Salvinia and Selaginella, heterosporous. This is homosporous. मैंने इसको ना गिरा ही दिया यहाँ से. लुका छुपी बहुत हुई. Not good. Funaria polytrichum sphagnum. ये सब mosses है, mosses. Funaria polytrichum and sphagnum. Funaria polytrichum and sphagnum. Funaria polytrichum and sphagnum. Funaria polytrichum and sphagnum. ये सब mosses है, okay? 20 मतलब कि 8 बज गए हैं, 8:30. Funaria polytrichum sphagnum. Funaria polytrichum and sphagnum. Funaria polytrichum and sphagnum. Funaria polytrichum and sphagnum. Sargassum and Laminaria, Ectocarpus dictyota. Dictyota, Ectocarpus, Laminaria, Sargassum. ये सब क्या है, ये सब है हम लोगों के लिए. ब्राउन एल्गी का एग्जांपल. आई विल गिव टेस्ट. टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट. क्या होएगा. मेरा नीट अच्छे से चल नहीं रहा है यार. टेस्ट 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 में कौन से पे हो. नेक्स्ट लेवल नोवाइस. ओके, मुझे टेस्ट देना है. प्लांट किंगडम, राइट. वेयर इज दिस चैप्टर. वर्कआउट बायोलॉजी. Here it is, plant kingdom. Simulate test. 30 questions, 10 minutes. Okay, this one. Start workout. 84 days. आयो 84 days. बस 84 दिन में मैं क्या करूँगी भाई साहब. Angiosperm resembles gymnosperm in presence of companion cell, type of fertilization, presence of ovule, nature of endosperm. ना different होगा. presence ovule, दोनों में ही ovule होता है क्या. ovule होता है. तो fertilization, presence of, अरे याद नहीं पता. Choose the correct answer from the alternative given. Pteridophyte differ from Bryophyte in having motile gamete, alteration of generation, antheridia, vascular tissue. Correct. The given figure shows two phases, A and B. Okay. Typical angiosperm life cycle. Select the correct. Okay. A कौन सा वाला gametophyte है, कौन सा वाला sporophyte. अरे ये gamete बन रहा है ना, ये gametophyte है, ये वाला sporophyte रहेगा. B is the sporophyte, A is gametophyte. Pyrenoid consist of, pyrenoid, starch, protein नहीं, starch और protein. Protein surrounded by starch. Starch surrounded by protein. Agar-agar, a mucilaginous substance, occur in the cell wall of agar-agar, Xylidium and Gracilaria. Bryophytes are also known as vascular cryptogams. Pteridophyte shows heterospory. हाँ, दोनों ही तो सही है. Vascular cryptogams. Cryptogams वो छुपाते ही तो हैं. Vascular cryptogams तो नहीं बोलते होंगे. Vascular
ओनली स्टेटमेंट 2, अरे ये मुझे फ्लैग कर देती हूँ, लेकिन मैं स्टेटमेंट 2 को ही राइट कर देती हूँ. 1 is false but statement 2 is pteridophyte shows heterospory. हाँ heterospory दिखाता तो है. Which of this is mismatch? Phaneros visible, हाँ. Cryptos concealed. Cryptogamy, ये शायद गलत होगा ना. Gymnonate, thallus diploid, thallus trachea windpipe, thallus diploid. Okay. क्रिप्टोगैमी, फेनोरोगैमी, क्रिप्टोगैमी कंसील्ड. हाँ क्रिप्टो का मतलब कंसील्ड तो है, मैंने के लिखा है इसमें, उसमें सी लिखा था. क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी, जिम्नोनेगेट, थैलोइड डिप्लोइड, ट्रैकिया विंगपाइड. और थैलस को ही मैं कर देती हूँ जिसके उस. फेनरोज विजिबल, क्रिप्टोज कंसील्ड, फ्लैग कर देती हूँ ना उसको भी. Bryophytes are amphibians of plant kingdom. They live in soil but dependent on water for sexual reproduction. One is incorrect. Both statement 1 and 2 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. Bryophytes can be separated from algae because of the possesses archegonia, contain chloroplast, are thalloid form, have no conducting tissues. Possesses archegonia, और हाँ archegonia में होता है तो thalloid form दोनों में ही होता है. Select the incorrect statement regarding reproduction in Rhodophyceae. Asexual reproduction occurs by non-motile spores. Sexual reproduction occurs by motile. The oogamous. Complex sexual reproduction is oogamous. Complex post-fertilization development event occurs. Okay. Asexual reproduction by non-motile spores. हाँ सही तो बोला, यही सही है, बाकी सब गलत है, तो कुछ भी बोल ली बहन. Read the given statement and select the incorrect ones. Sporophyte and mosses is more elaborate than in liverbird. Correct. Salvinia is homosporous. Salvinia, Silaginella and Salvinia heterospory दोनों ही. Example, life cycle in all spermatophytes is Diplontic. In all, ये वाला मुझे थोड़ा डाउट लगा 3 वाला के. In cycas, male cones and megasporophylls are born on the same tree. Cycas में okay 1 ही तो सही है. Select the incorrect वाला. ये 2 वाला incorrect है. 2 वाला कहाँ है, इसमें है और इसमें है, तो 4 और 1 में, एक तो एकदम करेक्ट है. स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलाबोरेट देन लिवरबर्ड. 1 तो बहुत सही है, 2 वाला तो 4 नंबर वाला गलत हो गया ना. लाइफ साइकिल इन ऑल स्पोमेटोफाइट डिप्लॉन्टिक. इन cycles मेल कोन्स एंड फीमेल born on the same trees. हाँ different trees में born होता है. Sphagnum is used as packing material for transporting living plants because of acidic nature. It does not undergo decay. Creeping capacity, water absorbing, water holding लिख रहा था ना. Creeping capacity कुछ भी हो सकता है वो. हाँ इसमें भी flag लगाता है. Which of the following incorrect about cyanobacteria? They have chlorophyll A similar to green plants. They are photoautotrophs. They lack heterocyst. द एल्गे स्पाइरोगायरा, और ये होगा तुम्हारा वॉलबॉक्स क्लोरोफाइसिया. ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज एम्फीबियंस? ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस बोलते हैं. साइकास एंड 2 कॉटिलेडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ नेकेड ओव्यूल्स. सीम्स लाइक मोनोकॉट. क्रीसिनेट फाइटिक्स, पता नहीं क्या है. फ्लोरिडन स्टार्च स्टोर फूड इन some protist. Bryophytes algae में होता है. Which one of is the following correct statement? Pteridophyte gametophyte has a protonema and leafy stays. Na in gymnosperm female gametophyte is free living. Na Antheridia and Archaea are present in Pteridophyte. Origin of seed habitat can be traced in Pteridophyte. Traced, ये तो मुझे थोड़ा डाउट लगा के. एंथ्रेडिया एंड एंथ्रेडियोफोर. अयो एंथ्रेडियोफोर बोला है, गलत कर दी बहन. विच ऑफ दिस प्रोड्यूसेस कैरोसिन? ग्रीन एल्गे, ब्लू एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे. कैरोसिन.
पता नहीं कौन. Spore in mosses are obtained within the capsule. Reason spores are formed by mitotic division in mosses. नहीं पता कितना सारा. While studying a plant, you discover that it has chlorophyll, no xylem. Its multicellular sex organs are enclosed in a layer of jacket cells. The gametophyte stage is free living. The plant body belongs to Chlorophycia bryophytes. A gametophyte stage is free living. Conifer trees produce a large quantity of vine-borne pollen grain. Windbone. The pollen grains of conifers have wings which has them float with wind current. Both statements are true. मुझे पता भी नहीं है. तुक्का मार दिया. Cycas and ginkgos are connecting link between cycas and ginkgo. Gymnosperm and angiosperm शायद. अयो नहीं टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म होगा. पता नहीं यार कितना सारा टफ लगा. हाइड्रोकोलोइड कैलाजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया. क्लोरोफाइसिया एंड फियोफाइसिया. कैराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. हाँ ये फील से आ गया एल्गी वाला क्वेश्चन. मैं फिर से गलत नहीं करना चाहती. जिम्मा आर मल्टी सेलुलर ग्रीन structure of vegetative propagation. They are found inside cups in Markinchia thallus. A plant having seed but lacking flowers and fruits belong to gymnosperm. Peat obtained from sphagnum mosses is used for fuel. हाँ peat. And then manure. Manure तो नहीं पता मुझे. Fuel and अरे ये पक्का दो ही होगा. मुझे नहीं पता यार. कितना टफ लग रहा है. टाइम ही नहीं है. Having capacity of absorbing water used to replace cotton and used as fuel is Markinchia sphagnum. Seed habitat originated in a Pteridophyta. Commercial product agar is used in ice cream and granule extracted from laminaria agar Zeridium and Gracilaria. ऐसा ही लग रहा है मुझे. 3 questions not attempted. Resume. कौन सा 3 है. मैंने नहीं कर दिया यार. कहाँ गया. अरे ऐसे नहीं दिख सकती क्या. यहीं पर है 2. This product kerosene algae. ग्रीन एल्गी होगा शायद पक्का. Mosses spores in mosses are contained within the capsule. Spores are formed by mitotic division in mosses. Spores and mosses are obtained within capsules. पता नहीं जो मर्जी आया उसी में मैंने दाग लगा दिया. 7 गलत किया मैंने. 7 गलत. ओके ब्रेक टाइम है. ये लो. सात गलत हो गए मुझसे. 7 गलत. देखते हैं क्या गलत हो गए हैं. Pyrenoid consists of protein surrounded by starch. Protein अच्छा ये गंदा सा क्वेश्चन. बुक मार्क कर दे. रोडोफाइसिया. इनकरेक्ट बोला था भाई. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by non-motile spores. Sexual reproduction is अरे इनकरेक्ट बोला था. तो गलती से मिस्टेक हो गया. 10. Select the incorrect state regarding the reproduction in Rhodophyceae. Sexual reproduction occurs by non. इनकरेक्ट बोला था. बार एक ही क्वेश्चन 2 बार गलत किया क्या मैंने.
नेक्ड ओव्यूल्स, हाँ ये तो मुझे नेक्ड ओव्यूल्स ही लगा था, नेक्ड ओव्यूल्स ही लगा था। मेरी ना बहुत सिली मिस्टेक हो गया यार, 16 वाला था ना, 19 वाला, ये तीनों का तीनों गलत हो गया। रेड प्रोड्यूस करता है, ओके, बट रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है। सपोज अब लीव ही कर देती। While studying a plant, you discover that the chlorophyll no xylem. सेक्स सर्कल मल्टीसेलुलर है ना, ठीक है ठीक है। इसकी भी था हाइड्रोकोलोइड कैरोसिन ऑफ रोडोफाइसिया ओनली, ओके यही तो था। फ्यूल बोथ ए एंड बी, लगा ही था, मैन्योर भी है, बी दिया है ना, तो ऐसा करके ऑप्शन में देते हैं तो हमेशा यही होता है, कोई बात नहीं। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आउट ऑफ 7 रॉन्ग, ब्रेक कहाँ गया, ब्रेक ही है ये, ब्रेक ही है। टेन मिनट का ब्रेक है। एस बी आर यू देयर? लेट्स प्ले सॉन्ग ना, कम वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, कॉपीराइट आता है। मुझे फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली। मेडिकल ड्रीम एपिसोड 1, अरे ड्रीम ही रह गया मेरा तो, मेडिकल ड्रीम। यप ओके, अच्छा तू है, मुझे लगा तू नहीं है। नहीं भाई नो सॉन्ग, फिर ब्रेक एक्सटेंड हो जाएगा ना, जाता है, ओके हाँ ठीक है, 10 मिनट का रख देते हैं। मुझे लगा आज शुभम तू अटेंड नहीं करेगा सेशंस, लेकिन तूने किया, आई एम सरप्राइज्ड ना। नोनू आर यू देयर? नहीं, दो ही तो लोग हैं, एक शुभम है, एक वो है ना विवेक। नोनू कहाँ गई? ओए बोला तो शुभम, वेयर इज नोनू, वेयर आर यू नोनू? ब्रेक है, प्लीज ज्वाइन, PLEAC प्लीज ज्वाइन। हाँ मैंने बुला दिया, मैंने बुला दिया नोनू को टीजी से। अर्जुन अग्रवाल, न्यू टू स्ट्रीम, व्हाट आर यू स्टडीइंग फॉर? शुभम इज राइट, अर्जुन नीट के लिए पढ़ रहे हैं। चल तक है, शायरी सुना दो। चल ठीक है, शायरी सुना दो। हाँ सुनाओ ना विवेक। अजी नोनू, नोनू आ गई।
ओए वो करना, शादी में ना पानी पूरी रखना। हाँ पानी पूरी रख देना। गोलगप्पे बहुत खाऊंगी, भर भर के, फ्री का। हमारे सोनू एंड नूनू, सोनू विद नूनू, नूनू विद सोनू। कब से ना वो शादी अटेंड नहीं किया है हिंदू लोगों का, तो तुम लोगों का पक्का करूंगी। गिफ्ट में क्या देना है? मैंने इतना गंदा गिफ्ट सोचा ना। ब्रेक दी, कोई अभी आके गाली देगा। 10 मिनट का ब्रेक है, अभी तो 5 मिनट ही बचा है। ब्रेक 5 मिनट में ही लिख देती हूँ, ब्रेक 5 मिनट। मोहब्बत के हर रास्ते, पता नहीं क्या क्या रास्ते हैं, वो तो सिर्फ नोनू और शुभम को ही पता है, सोनू और नोनू को ही पता है। मेडिकल खोल लूँ, मस्त चलेगा। हाँ खोलो खोलो। Our newlywed couple is shying. Nunnu re and Nunu and Sonu. Sonu. आज मेरा नेट ना बिल्कुल नहीं चल रहा है। सोनू के टिट्टू के स्वीटी, सोनू के टिट्टू की स्वीटी। मेरी शादी पहले हो गई भी, तुम्हारे तो अटेंड करूंगी ही। हाँ मैं तो इसी ईयर करूंगी। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तुम दोनों को ना हाँ बोलने के अलावा, क्योंकि तुम दोनों टीम अप करने लगे हो। मुझे एलेक्स को जल्दी बताना होगा, एलेक्स वापस आ जा। अगर एलेक्स नहीं है तो मैं हार जाऊंगी। ना इस्लामिक होगा ना ब्रो। पहाड़ी लोग तो मोस्टली हिंदूज होते हैं, उन लोगों का थीम तो बिल्कुल नहीं।
कौन कौन इनवाइटेड? दुल्हा एंड मी, ओनली दुल्हा एंड आई एम इनवाइटेड. तुम्हें तो पता भी नहीं हो. चौदह सेकेंड है भाई. ब्रेक टाइम ओवर ओवर ओवर. मेरा यहाँ पर वो अटक गया. ब्रेक ओवर गाइस. मैं सबका अटेंड कर लेता हूँ. मेरी हंसी रुक नहीं रही है. लॉल. आज तो रुकेगी भी नहीं. लॉल. अरे मैं कैमरा मैन दूंगा काम. इसमें भी जीएसटी लगता था क्या? मुझे नहीं पता था. स्टार्ट चैट्स ऑफ. ओके. देखो इतना सोच रहा है एसबीआई बैंक. वो तो नहीं पता. ओके. नहीं ऑन रखो. ओके. एलेक्स मैं मार दूंगी. 100 टेक्स्ट किया मैंने तुम्हें अभी टेलीग्राम पे. मैं आ जाऊँ क्या अपनी पे? सच्ची में मैंने देखो तो जाके टेलीग्राम इतना ज्यादा टेक्स्ट किया ना. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. 9. चलो पढ़ते हैं अब. दिखा गया ना. आई रियली वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड शेयर योर व्यूज ऑन द क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन अर्जुन? वो ना विवेक ना वो पूछ रहा था एलेक्स शादी का डेट कब है. ये पूछ रहा था. उसे बता दो ना शादी का डेट कब है. शुभम पहले जाके निधि से नोनू से पहले जाके कुछ बात कर लो. चैट्स ऑन करना है कि ऑफ करना है? नोनू शुभम से बात कर लो. सोनू से बात कर लो. 60 कर दिया है. कब से कब? ओह ये भी तो लिखना है. ये हम लोगों का थर्ड स्लॉट है ना. हाँ स्लॉट 3 है. What's the 60 minute? कब से कब सेशन है मेंशन करो ना चैट्स का एज यू विश. कैलकुलेट कर लो तुम ही कितना हो जाएगा यहाँ से. 9:05 to 10:05. ओके. अरे ये क्यों नहीं खुल रहा है भाई? मैं इसको पिन नहीं कर पा रही हूँ खुद का.
एक मिनट। अब शायद हो जाए पिन। नहीं, मैं पिन नहीं कर सकती इस मैसेज को पर्टिकुलरली। मैं खुद को पिन नहीं कर सकती क्या? अभी तो मैंने खुद को पिन किया था ना, यहाँ पर ही देखो तो। एक मिनट रिफ्रेश कर देती हूँ। हाँ, नेट आज लैग कर रहा है ना। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Kindly see the chats. Oh, you will find my question. Okay. I would really appreciate if you could share your views on the question. Where is it? New to the stream, what are you studying for? New to the stream, what are you studying for? Is that the question, Arjun? We already answered. Even Suvam did and I also did. I am preparing for NEET. Then your second chat is there. I would really appreciate it, yeah. After that, there is no chat. No, there is no other chat. Maybe it is blocked. Wait, let me check. From here. Hey yo, I'm not going to waste my time over there. नहीं है. New to the stream, यही वाला तो है. What are you studying? Then. Bro. I'm unable to find any question after that. What the heck? Hey yo, you find by yourself or you retype it. I don't have time to scroll. Fuck. I'm not going to, okay? Scroll it. मैंने पिन भी कर दिया किसी को, भाई साहब. वही तो, फिर से टाइप करने में इसका क्या जा रहा है भाई? हाँ छोड़ दो, अगर नहीं जाता भी ना तो भी मैं ही ब्लॉक कर देती, गधा कहीं का. हाँ वही तो ना, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा ना, इसलिए सर्च कर दिया, बेवकूफ कहीं का. लेट्स डू इट. डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट स्टार्ट. ओके, क्या कर दूं? चैट्स को ऑफ कर दूं? बोलो नोनू. नोनू एंड सोनू दोनों ही मिलके बोलो. कर दो. ओके, आई एम सॉरी टू वेस्ट. इट्स ओके अर्जुन. स्टडी विद अस अर्जुन. अर्जुन अग्रवाल.
जनरल हो गया ना, तुम्हें तो और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. लेट्स स्टडी टुगेदर.